atomic structure. ठीक है? In this atomic structure, we talk about the subatomic particles. Subatomic particles means all the particles that are present in an atom. So basically, we are dealing with the fundamental neutrons. And you have that right side wala image in your mind. ये वाला जो है of atomic structure. Image क्या है? Yes, we have a nucleus that contains protons and neutrons, and the electrons are revolving around the nucleus into a fixed shells. Shell number 1 can accommodate 2 electrons, shell number 2 can accommodate 8 electrons, 3 में 8 भी आ सकते हैं, 18 भी होते हैं, and so on. Now, the first thing about electron, proton, neutron, हमने general introduction लिया था, that's about the number, nature, and the number of subatomic particles. ठीक है? So, first of all, thank you, भाई. So first of all, nature की बात करते हैं. So in nature, I said के the relative charge of proton is +1, neutron 0 होता है, electron is -1. The relative mass of proton is 1, neutron is 1, electron is 1 over 36. The question is, okay, what is the between the charge and the relative charge? इन दोनों डिफरेंस क्या है? मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट ओके ठीक है बेटा. सो एक्चुअल चार्ज का मतलब वो तो कुछ और है जो कि केमिस्ट्री में हमारा कंसर्न नहीं है. बेसिकली वी आर डीलिंग विद द कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन. सो दैट्स व्हाई इन अ न्यूट्रल एटम, कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं. दैट्स व्हाई यू हैव द बैलेंस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है? इसी तरह से 1/1836 इज द रिलेटिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एंड हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल. ठीक है? ना होने के बराबर है. क्यों बराबर ना होने के बराबर है? बिकॉज द मास ऑफ, इफ यू एड अप द मास ऑफ 1836 इलेक्ट्रॉन एक तरफ रखो एंड यू प्लेस जस्ट वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन ऑन द अदर साइड, तो दोनों आपस में बराबर हो गए. यानी अराउंड 1836 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है इट्स इक्वल टू वन प्रोटॉन. तो कहना चाहिए द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है. ठीक है? इस बात को याद रखना कि द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल. जितना प्रोटॉन पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल. कीपिंग दिस वन इन माइंड, this is a diagram that shows the deflection of electrons, protons and neutrons into an electrical field. यानी आपके पास एक सोर्स है and this source is emitting proton, neutron and electron. Neutrons are going straight, being a neutral particle. Protons towards the negative plate and electron towards positive plate. But you can see the deflection of electron is much more greater as compared to proton. ज़्यादा क्यों है? क्योंकि lighter. If I have a +1 charge on this pen and the +1 charge on this chair, और आप किसी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दोनों को अट्रैक्ट करें तो कौन ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगा? पेन. चार्ज तो दोनों पे बराबर है लेकिन पेन का मास कम है. लाइटर वेट पार्टिकल इजियर टू डिफ्लेक्ट. ये लिखा हुआ है द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन ड्यू टू इट्स स्मॉलर मास. ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमने बात की थी अबाउट द नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है? लेट्स से सोडियम 1123. तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स वी हैव? 11 प्रोटॉन्स. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? न्यूक्लियन नंबर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज़ इट्स अ न्यूट्रल पार्टिकल. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? 23 माइनस 11 व्हिच इज गोइंग टू बी 12. तो कोई भी न्यूट्रल एटम हो, वी कैन इजीली फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. In a similar way, a cation. Cations are basically the ions that have a positive charge. और हम क्यों कहते हैं cations? Because they move towards cathode in electrolysis. Cathodes are the negative terminal ना, तो जो भी आयन negative terminal की तरफ जाएगा हम उसे cations कहेंगे और positive charge होगा उसपे. So cations are positively charged.
+1 charge means this ion contain one less electron as compared to proton. सो अगर आपके पास Na प्रोटॉन नंबर 11 चार्ज है +1 का, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11 होने चाहिए थे, लेकिन +1 चार्ज की वजह से एक कम हो जाएगा। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके सामने देखें, सोडियम Na पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन नंबर 23, प्रोटॉन नंबर 11। प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, और इलेक्ट्रॉन 11 -1 विच इज 10, एक इलेक्ट्रॉन। इन अ सिमिलर वे मैग्नीशियम 2+ में 12 से 2 कम हो जाएंगे। इन अ सिमिलर वे एनाइंस की अगर हम बात करेंगे, तो एनाइंस आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। दीज आर द आयंस दैट मूव टुवर्ड्स एनोड, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एनाइंस, ठीक है। उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। -1 का मतलब जितने प्रोटॉन है उससे एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन। -2 मीन्स जितने आपके पास प्रोटॉन है उससे दो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यू कैन सी Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव है 17 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 18 है, और इलेक्ट्रॉन 17 + 1 18 है, ठीक है। क्लियर? इन अ सिमिलर वे ऑक्सीजन, दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑक्साइड आयन, है ना। O2- इज अ ऑक्साइड आयन। तो प्रोटॉन कितने हैं? 8, न्यूट्रॉन आर 8, इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए थे, लेकिन हमने कितने लिखे? 10। वी एडेड 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड, क्यों ऐड किए? क्योंकि चार्ज था -2 का, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, ठीक है। क्लियर है? यहां तक तो कोई मसला नहीं है। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं एंड दैट्स द लास्ट थिंग। इस बार हम थोड़ा आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट लेंगे। हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम? 2 हाइड्रोजन एटम है भाई, ठीक है। और हर हाइड्रोजन एटम में एक एक प्रोटॉन है, तो 1 + 1 2 प्रोटॉन हो गए, 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन में नहीं होता, कोई भी नहीं होता, ठीक है। इन अ सिमिलर वे इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन H2O, वाटर में अगर निकालना, तो 2 हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन 8, यानी 10 प्रोटॉन हो गए, 8 न्यूट्रॉन हो गए, और इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे। इट्स अ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल। तो देखें वाटर यहाँ कैलकुलेट हुआ है। क्लास के बाद आप इसकी पिक्चर ले लेना बेटा, है मोबाइल ताकि आपके पास नोट्स आ जाए, ठीक है। और फिर मैं शेयर कर दूंगा बाद में आपके साथ। NH3 नाइट्रोजन 714, हाइड्रोजन 11, प्रोटॉन है 10, न्यूट्रॉन है आपके पास 7, और इलेक्ट्रॉन है 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। इन अ सिमिलर वे आप अगर बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की, तो 1 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 7 + 4 11, न्यूट्रॉन होने चाहिए 7 + 0 7, और इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए थे, लेकिन +1 चार्ज की वजह से हमने एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आराम से निकाल लोगे। न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, एंड इन अ मॉलिक्यूल। लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स आज की क्लास में। सो आइसोटोप्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली आइसोटोप्स। ओके, हाँ जनाब, आइसोटोप्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन 2 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन here, 1 1 1 2. And what is the difference between these two atoms of hydrogen? Same proton number, but excellent. That's the definition of isotope. If I ask you to calculate the number of protons, electrons and neutrons in both of these atoms, तो प्रोटॉन दोनों में एक जैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स दोनों में एक जैसे होंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिकॉज न्यूट्रल एटम है। द ओनली डिफरेंस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो इट मींस दैट इफ आई आस्क यू टू डिफाइन आइसोटोप, मैं आपसे कहूं कि डिफाइन आइसोटोप, यू हैव टू ऑप्शंस टू गिव द डेफिनेशन। दो ऑप्शन होंगे आपके पास। एक ऑप्शन होगा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बिकॉज बोथ आर हाइड्रोजन, ठीक है, विद द सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर, दैट्स द फर्स्ट डेफिनेशन। Second definition, atoms of the same element having the same number of protons and electron but different number of neutrons. That's the second definition. मैंने आपसे कहा डिफाइन आइसोटोप, आपकी चॉइस है, जो दिल चाहे दोनों में से डेफिनेशन लिख दीजिए। बट अगर मैं आपसे कहूं डिफाइन आइसोटोप्स इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, अब क्या पहली वाली प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर की डेफिनेशन लिख सकते हैं? नहीं। आप कौन सी लिखोगे? सेकंड। तो क्या ही बेहतर हो कि हम सिर्फ सेकंड डेफिनेशन को ही लिखें हर बार। आइदर दे आस्क अबाउट डिफाइन आइसोटोप और दे आस्क अबाउट डिफाइन आइसोटोप इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर वो कभी पूछ ले इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर लिखें, तो वो तो आपको याद ही होगा। तो वी आर गोइंग टू राइट डाउन द बोथ डेफिनेशन। और वो डेफिनेशन क्या होगी? एटम्स, देखो की पॉइंट क्या है ऑप्शन 1 डेफिनेशन का, आप आइसोटोप की हेडिंग डालो, 2 पेजेस 3 पेजेस छोड़, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग
with same proton number but different nucleon number. ठीक है बेटा, दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन. सेकंड डेफिनेशन जो कि मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस डेफिनेशन इज इन टर्म्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स. क्या होगी? अगेन द सेम डेफिनेशन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट with same number of protons and electron but different number of neutrons. ठीक है ना बेटा, आई होप के the point is clear that whenever they ask about in terms of subatomic particles, second definition लिखनी है, and whenever they ask you about any particle, any definition, तो आपका जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं. ठीक है? And hmm, yes. They are. You mean do they ask about the definition? Okay, let me show you something. Mm-hmm. 2 marks. देखिए, explain the meaning of term isotope. Same copy paste. Atoms of the same element having the same number of protons and electrons, different number of neutrons. That's the first one. ठीक है. Define isotopes in terms of subatomic particles. Same for 1 mark. ठीक है. And so many times, so many times. So this is basically important कि आपसे ये definitions obviously पूछी जाती हैं, and they're asking explain the meaning of the term isotope. देखिए वर्कशीट है, ठीक है ना? So they asking quite frequently. इतना ज्यादा मतलब ये important stuff है हमारे लिए, याद रखना. Okay, next thing. Next thing, can I say that isotopes have the same chemical properties but different physical property? पहले हम term लिख लेना, फिर इसमें एक दो बातें करेंगे. ठीक है? So let's isotopes have same chemical properties but different physical properties. ठीक है भाई? पहले तो let me just ask you, what does the chemical properties mean? क्या मतलब है chemical properties का? The properties, simple way. Chemical properties means all chemical reactions. Reaction with oxygen, reaction with air, reaction with water, reaction with acid, whatever it is. All the chemical reaction. And physical properties means physical properties mean the physical state, solid, liquid, gas hai, color, density, solubility in water, melting point, boiling point, viscosity. You know the term viscosity? It's the same term as density, but density is generally for liquid सब और solid सब के लिए हो सकती है. Viscosity, हाँ. Viscosity, can I say that the viscosity is basically the resistance against flow? यानी honey is more viscous, उसकी viscosity ज्यादा as compared to water. So if you just throw honey on any surface, it moves slower, flow नहीं करेगा, resistance face होगी as compared to water. So that's basically called the viscosity. So एक चीज हमेशा याद रखना, देखो, all the chemical properties of any atom depends on number of outermost electron या number of electron. ठीक है? किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे.
That's why all the element present in a group 2 of the periodic table, how many outermost electron? 2. They have the same chemical properties. Group 3, same chemical properties. ठीक है? अब मुझे बताओ आइसोटोप्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, है ना? और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसको हम आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर. ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियॉन नंबर यानी मास के ऊपर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के ऊपर. और आइसोटोप्स का मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होता है. दैट्स व्हाई दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो रही हैं? ड्यू टू डिफरेंट masses. Nucleon number. सही. And why they have the same chemical properties? Due to same number of electrons. ठीक है बेटा, आई होप ये दोनों बातें क्लियर होंगी कि why do isotopes have the similar chemical properties and same different physical properties. ठीक है? ये समझ में आ रही है बात बेटा? आसान है. ठीक है? इट्स आई एग्री, इट्स ओ लेवल्स. नाउ कीपिंग दिस वन इन माइंड, if I move forward and I say that this is an isotope of hydrogen, H12, and generally this isotope of hydrogen is represented by a letter D, because it is called deuterium. क्या कहलाता है? It is called deuterium. How many protons this have? 1. How many electron? 1. How many neutron? 1. By keeping this one in mind, if I ask you, can you give me the number of electron, proton and neutron in D2O? अब H2O नहीं है, अब क्या है? Now this is D2O. D2O क्या होगा? Hydrogen 1 2, hydrogen 1 2. You have 2 hydrogen and you have 1 oxygen. 8 16. सब बताओ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? गुड. इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10. है ना? न्यूट्रल वन. Clear? Another example. Can you give me the number of electrons, proton, and neutron in OD negative? OD negative. अब कैसे पता चलेगा जनाब? आप लिखोगे OD negative है, so you have 1 oxygen. स्प्लिट करके लिख लो, आसान हो जाएगा. You have 1 D, which is 1 2, है ना? एंड द नेगेटिव चार्ज तो प्रोटॉन हो जाएंगे 9, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 9 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9 होने चाहिए थे, +1 करके 10. एक्सीलेंट, जबरदस्त. ठीक है? सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ओडी नेगेटिव. अभी बात समझ में रहेगी? कीपिंग दिस वन इन माइंड, अब अगर हम आगे चलते हैं एंड इफ आई शो यू सम पास्ट पेपर क्वेश्चन. देखो, बार बार कह रहा हूँ कि my way of teaching is कि मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थ्रो करता हूँ एंड देन वी डू द रेलेवेंट टॉपिकल क्वेश्चन, ताकि हमें पता चले कि कितना हम कर सकते हैं. ठीक है? वी कंप्लीट द एंटायर चैप्टर और फिर उसके बाद भी मूव टूवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चन, तो फिर मजा नहीं आता, क्योंकि बात समझ नहीं आई होगी तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा. तो सिमिलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, ये एक अलग बात है. यस, नो, ओके, एग्जैक्टली सिमिलर. क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है बेटा, D negative. So D negative means H12 with a charge of minus. So proton 1, electron 2, neutron 1. If it says more electron than proton, no, that's not true. More electron and proton means it cannot be a positively charged particle. So you don't have to solve B. है ना? More electron than proton का मतलब तो it should be a negative charge particle. So B to solve it. Let's talk about the D option. As you said, D.
oxygen 8, 16, hydrogen 1, 1 with a negative charge. So protons are 9, neutrons are 8, and electrons are 10. So it contains more electrons than protons and more protons than neutron. Is it true? ठीक है, हो रहा है? So this is basically the right option. Oh, let's try OD negative as well. Oxygen 8, 16, hydrogen 1, 2 with a negative charge. So proton तो हो जाएंगे 9, 8 plus 1. Neutrons are going to be 8 plus 1, 9. So they have the same number of proton and neutron. तो हमारा statement यहीं पे गलत हो गया. सही है? अब आपने देखा कि how important it is to know that how we can calculate the number of subatomic particle in a negatively charged ion, positively charged ion, neutral molecule, OH negative type ions. तो इसलिए हमने ये सीखा है पिछली क्लास में, ठीक है? And then okay, this one. It says skin cancer can be treated using a radioactive isotopes of phosphorus, a compound containing the phosphide ion P1532 with a 3 minus charge, wrapped in a plastic sheet and is strapped into the affected area. What is the composition of the phosphide ion P3 minus की composition बतानी है. So proton must be 15. So it means that ये तो हो गया खत्म. ठीक है. न्यूट्रॉन आपके पास कितने हो जाएंगे 17, 32 माइनस, ठीक है 17, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18. सो ए इज द आंसर. Have you done this one? These are the similar questions. Electron, proton, and neutron all are different. You just have to find out proton, electron, and neutron. Shall we move forward? Can you do it? These type of questions हो जाएंगे ना? है ना? इतना मुश्किल नहीं है. These are the easier questions. Let's move further ahead. देखिए, okay, it's here. My question is कि अगर मैं आपसे कहूं कि in a periodic table, if you look at the symbol of chlorine, it says chlorine 17 and 35.5. In a periodic table, it says chlorine 17 and the nucleon number is 35.5. So if I ask you how many protons, electron, neutron, is it not possible to having 0.5 neutrons? Okay. So why this is 35.5? Because in a periodic table, you are not provided with a nucleon number. You are provided with the average atomic mass of an element. Periodic table में nucleon number, they never ask you to find out the number of neutrons, protons, and electrons by giving you the AR. They always give you the nucleon number of any isotope. Either it's an isotope. Nucleon number can never be a, क्या कहना चाहिए, डेसिमल में नहीं होता. It's a whole number. ठीक है ना? तो 1, 2, 3, 4 में से कुछ होगा. तो हमेशा किसी आइसोटोप के बारे में पूछा जाता है. जैसे हमने हाइड्रोजन 1, 2 के बारे में पूछा, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737. So let's talk about the average atomic mass. सबसे पहले हम बात करते हैं कि relative average atomic mass. The definition of relative average atomic mass, and this is called AR, and for molecules it is called MR. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे एवरेज क्यों आया? बिकॉज दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप on the basis of their percentage abundance. We have
two isotopes of chlorine, chlorine 35 and chlorine 37. न्यूक्लियन नंबर बता रहा हूँ. Chlorine 35 and chlorine 37. By nature, it's always fixed that the chlorine 35 is always 75% and chlorine 37 is always 25%. By nature, it's 3:1 में ही होता है हमेशा. Bromine हमेशा 1:1 में होता है. So by nature, it fixed है. When you have to find out the average mass, you have to take the like the average of these isotopes. ये तो हो गया एवरेज. एवरेज का मतलब क्या हुआ? द एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स. व्हाट डज द रिलेटिव टर्म मींस? व्हाई दिस इज द relative term here? Whenever we use the relative term means we are comparing it with something. So we are comparing the atomic mass or the average mass of any atom with carbon 12. जैसे एक आपके पास पेन बैलेंस, पता नहीं क्यों मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पेन बैलेंस है, तो आपने एक तरफ स्टैंडर्ड वे रखा ना 1 kg का, एंड देन दूसरी तरफ वो स्टफ रखा. जब दोनों बराबर हो गए, यू सेड कि दिस इज इक्वल टू 1 kg. यू हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड. रन हो रही है. ओके, जस्ट 2 minutes वेट बेटा, फॉर वेट फॉर द रन ब्रेक. ओके, सो I said कि relative term means we are comparing it with something, and to compare the masses of an atom, we always compare it with the mass of carbon 12. Now, question is why carbon 12? Because carbon have other isotopes as well. Carbon 13 भी होता है, carbon 14 भी, which is radioactive. But the percentage of other isotope of carbon is very less. So when you calculate the AR of carbon तकरीबन 2 decimal places तक 12 आता है. ठीक है? So that's why we keep it as a standard, because it's almost a whole number. So we're comparing it with the whole number. And the second reason, carbon is the most abundant. So relative का मतलब we have to compare it with the carbon 12. Average का मतलब we have to take the average of all the isotopes. So definition लिखते हैं. It is the average mass of all the naturally occurring isotopes on a scale where the mass of one atom of carbon 12 is exactly 12 units. ठीक है बेटा? Means you are taking an average and then comparing it with the carbon 12. It is the average mass of all the naturally occurring isotopes on a scale where the mass of one atom of carbon 12 is exactly 12 units. As an example, you have two isotopes of chlorine. Chlorine 35, proton number 17, chlorine with a proton number 17, and the other isotope is 37. Okay? Now, by nature, the percentage abundance of 35 is always 75%, and this one is always 25%. It's always by fix. हमेशा 35 वाला 75 होगा, 37 वाला 25 होगा. If I ask you about the ratio of abundance, मैं अगर कहूं कि इसको रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो 75 is 3 times of 25. That's going to be 3:1. And if I ask you, can you read the same values if it is provided in a form of a graph? अगर मैं यहां पर आपको लिख दूं कि this is 35 वाला which is 75%, यहाँ पर होगी percentage abundance, and this is 37 वाला 25%. ठीक है? और ये है आपका न्यूक्लियॉन नंबर. Nucleon number 35 is 75%, 37 is. So either the percentages are given in a form of a, or in a form of a ratio, or in a form of a percentage. आपको इससे AR calculate करना आना चाहिए. So how we calculate the AR? O levels में भी I think कि आपने किया होगा. AR is equals to, now we have to take the average.
35 वाला 75%, that's the average of 35 as per their percentage abundance, plus 37 wala 25% divided by total percentage, which is 100%, and the AR is going to be 35.5. That's the AR given in a periodic table. Okay, 35.5. In a similar way, if you have to find out the same AR by using the ratio of abundance, तो आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे भाई 35 वाला 3 times प्लस 37 वाला 1 time divided by 100 divided by 4, the total ratio, not 100 in this time. Why? Because we always divide it with the total ratio. टोटल रेशियो कितना है? 4 पार्ट्स है ना, 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स क्या है? 75 और 1 पार्ट क्या है? 37, 35 और 37, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, और अगर परसेंटेज में लेंगे तो डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। इस तरह भी आंसर वही आएगा, विच इज 35.5। दैट्स द सेम आंसर यू विल गेट। ठीक है, गॉट इट। सो इफ द रेशियो ऑफ अबेंडेंस इज गिवन, तो आप क्या करेंगे? आप रेशियो से एवरेज निकालेंगे एंड डिवाइडेड बाय द टोटल रेशियो। इन दिस सेक्शन आई आई रिक्वेस्ट के, बल्कि आई सजेस्ट कि whenever you have to divide it by the total percentage, please do cross check के total percentage आपके पास कितनी आ रही है। हो सकता है टोटल कोई आइसोटोप मिसिंग हो जिसकी परसेंटेज ना, तो आपको डिवाइडेड बाय हो सकता है 98.8 करना पड़े, डिवाइडेड बाय 100 ब्लंटली आप हर बार नहीं कर सकते। कैन यू सॉल्व वन एग्जांपल फॉर मी? If you have, if I give you the two isotopes of bromine, bromine 79 and bromine 81, ठीक है? This one is basically 51% and this one is basically 49%, and I need the AR of it. चल जल्दी से, can you please find out the AR? आंसर इज अप टू 1 decimal place पे आंसर आएगा, ठीक है। न्यूक्लियन नंबर के साथ कोई डेसिमल नहीं लगा सकते, मेक श्योर ये बात याद रहे आपको। अपन नो कैलकुलेटर बेटा है। सो चला राइट टू फॉर्मूला, आपने क्या लिखा होगा बेटा? एक्सेलेंट। 79 multiply 51 plus 81 multiplied by 49 and then divided by 100. AR is going to be 79.98, which is going to be equals to 80.0. अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ 80 लिख दिया, -1। रीजन ये है कि मास नंबर अप टू 1 decimal place होना चाहिए। न्यूक्लियन नंबर में आपने 80.0 लिख दिया, 1 नंबर गया। Nucleon number must be a whole number. It's not a decimal number. So if it's a nucleon number, then it should be a 79, not 79.0. But if it's a AR, then it's always 79.0, not 79. ये फर्क याद रखिएगा। न्यूक्लियन नंबर होल नंबर होता है और यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऊपर 35.5 लिखा है, if the answer is exactly 35, तो मैं 35.0 लिखता। AR up to 1 decimal place आपने आंसर करना है। न्यूक्लियन नंबर नो डेसिमल, नो डेसिमल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? लेट्स सी हाउ दे आस्किंग दिस क्वेश्चन इन अ पास्ट पेपर। क्लियर है यहां तक? ना अब देखते हैं पास्ट पेपर में कैसे पूछते हैं आपसे। सो ऐसे पूछते हैं भाई। चलें, आई थिंक यू नीड अ कैलकुलेटर। मैं ये हिला नहीं सकता बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाएगा। यू नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस। 63 वाला कितना है जनाब? 7 times, एग्रीड। So 63 multiplied by 7 plus 65 take out your calculator. 65 multiplied by 3 divided by 10. And the answer is? Hmm.
63.6 is the answer. Easy. Okay, let's move forward. Another one. Practice भी यहीं करके जाएंगे साथ साथ. This is 40%. If it's difficult for you to read the graph from the screen, this is 30%, and this is again 30%. So the formula is going to be 64 into 40 plus 66 into 30 plus 67 into 30 divided by 100. And the answer is A तो हो नहीं सकता. A उसने लिखा ही गलत है. 65 लिखा है ना. So this is a nucleon number. मैंने कहा डेसिमल वाली बात याद रखना. एग्री हो जाएगा. गुड. Another one. Okay, 10 wala is 1 times, 11 wala is 4 times. So 10 into 1 plus 11 into 4 divided by 1. Good. So 10 into 1 plus 11 into 4 divided by 5. 10.8. कैसे तेजी से आंसर आ रहे हैं हमारे. माशाल्लाह. An element X consists of 4 isotopes. The mass of a spectrum of X is shown in the diagram. What is the relative atomic mass of X? Relative atomic AR पूछ रहा है आपसे. This is 50%. This is 10%. This is 20, and this is 20% as well. In case you're facing any issue in reading this graph from the screen. ठीक है. B. So yes. Do check your answer, beta. अगर आपका आंसर यही आना चाहिए. I think this is the right answer. 90 into 50 plus 91 into 10 plus 92 into 20 plus 94 into 20 divided by 100. And the answer is 91.30. That's the correct answer, beta. ठीक है. So I think now you can handle these type of question. और जब हमें लगता है कि yes we can handle these type of question, तो फिर एक ऐसा question भी आ जाता है. आप handle करो. The relative atomic mass of copper is 63.5. Yes, it is 63. Why not A? हाँ. देखो 63.5 shows that it is more than one isotope. पहली बात. ठीक है. और दूसरा x एक्सिस पे क्या है? मास टू चार्ज रेशियो. ये न्यूक्लियॉन नंबर है. ठीक है. दिस इज अ न्यूक्लियॉन नंबर. एंड न्यूक्लियॉन नंबर कैन नेवर बी अ डेसिमल नंबर. 63.5 नहीं हो सकता. अभी आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मास टू चार्ज रेशियो का मतलब होता है न्यूक्लियॉन नंबर. एंड न्यूक्लियॉन नंबर कैन नेवर बी अ डेसिमल. ठीक है. सो इट मींस दैट कि ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज इट इज 63.5 shows that it must consist of more than one and a similar as chlorine 30. So B C D में से कोई C is the right answer. चेक कर लो बेटा C को. I'm sure that C is the right answer. That's the difference between doing it topical and doing it yearly. Exam is all about shifting your mind from one topic to another topic in 1 hour 15 minutes in 40 MCQs. बात समझ आ रही है? So it's always like easier when you do it topical. When you do it yearly, then you solve question number 1, atomic structure, question number 2, moles, question number 3, enthalpy changes, question number 4, chemical equilibrium, and then organic, then inorganic. So वो shifting की वजह से ना issues create होते हैं. That's why I'm always saying कि कभी भी याद रखना O levels, A levels में topical से preparation नहीं होती सर. Topical past papers are important to get the good concept of anything you are revising. जैसे अभी हम कर रहे हैं.
इट्स ऑल अबाउट ईयरली प्रैक्टिस। तो अभी तो हम टॉपिकल, चूंकि अपने एक टॉपिक को समझने के बाद हम कर क्या रहे हैं, हम उस टॉपिक से रेलेवेंट जितने भी 10-12 ईयर्स के क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, ताकि हमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाए। फिर उसमें जो ट्विस्ट आते हैं, जैसे ये छोटा सा एक ट्विस्ट यहाँ आया, ये सारी चीजें हमें खुद ही आदत पड़ जाती है। सो लेट्स सी, आर दे आस्किंग एनी क्वेश्चन इन पेपर 2? सो यस, दे आस्किंग क्वेश्चन इन पेपर 2 अबाउट इट। इसका ये वाला पार्ट देखो, ये पहले वैसे पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डेफिनेशन, यस वी कैन कॉपी पेस्ट द डेफिनेशन, बट आइसोटोप्स ऑफ, ये कौन है, आयरन है बेटा, ठीक है। तो ये दे गिव यू 3 आइसोटोप्स एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ आयरन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 डेसिमल प्लेस में आंसर करना है। सो यस, इट्स गोइंग टू बी 54 मल्टीप्लाई बाय 5.84। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक बेटा, आइदर द टोटल परसेंटेज इज 100 और नॉट। इट सीम्स लाइक 100। देखो, हाँ अच्छा, अब देखो, आप अगर 10 से 100 के बजाय 99 पॉइंट समथिंग से, तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे डिफरेंस आएगा, फर्स्ट डेसिमल प्लेस में आंसर सेम ही होगा। राउंड ऑफ करोगे वही बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल 100 से कर लो या 97.96। हाँ 69, दोनों से एक ही बात है। तो आई रिकमेंड कि आप 99.69 से कर लें, जिससे भी कर लें। द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, विच इज 56.5, आई थिंक आंसर आना चाहिए, या 3। You can divide it by 100 beta, or you can divide it by 99.69. It's up to you, जैसे भी divide कर दो। फिफ्टी फाइव पॉइंट 55.9, थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है ना। सो आई थिंक 99.67 से ही हमें करना पड़ेगा, वट एवर इट इज। दोनों से आंसर, आई एम श्योर कि बोथ आंसर आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। ठीक है, अगेन 2 isotopes of magnesium are given, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, दे हैव 2 isotopes of magnesium, 26, 24 percentages are given. You can write down the definition: relative isotopic mass, ठीक है। This is the mass of all the naturally occurring isotope, average mass of all the naturally occurring, same AR वाली definition लिख सकते हैं। The relative atomic mass of magnesium is 24.3. Calculate the percentage abundance and hence the relative isotopic mass of the third isotope of magnesium. Give your answer to 3 significant figure. उसने कहा मैग्नीशियम के, you have 3 isotopes of magnesium, ठीक है। 24, 26 तो उसने बता दिया। There is another unknown isotope. Give the percentage of that isotope. कितनी परसेंटेज में होना चाहिए वो, है ना। टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज 100%, आउट ऑफ विच 79% ये वाला है, 11% ये वाला है, तो 10% रिमेनिंग होगा, क्योंकि ऑल टुगेदर कितना हो गया, दिस इज 80%, सॉरी दिस इज 90%, सो द लेफ्ट ओवर 10% इज द अदर आइसोटोप, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ द अदर आइसोटोप। कैसे निकलेगा, ए आर गिवन है 63, 24। देखें, आप कहेंगे 24.3 ए आर विच इज इक्वल्स टू 24 वाला 79% प्लस 26 वाला 11% प्लस एक्स वाला, एक्स को नहीं ए कह देते हैं वरना दो क्रॉस आ जाएंगे, एक्स वाला 10% डिवाइडेड बाय 100%। ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आए। अमन, यू गॉट दिस वन बेटा, ठीक है। नाउ दे गिव यू द ए आर and they ask you the isotopic mass. They give you the AR and isotopic mass, and they might ask you the percentages, whatever it is, whatever the variable is missing. So the answer is 24 to 25 आना चाहिए। बीच वाली मिसिंग है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है, तो 0 लिखना पड़ेगा हमें, है ना।
मोस्टली बता देते, यू कैन सी इट्स रिटन थ्री सिग्निफिकेंट। पहले तो 2 2 4 3 0 हो जाएगा ना इन सबको ऐड करके। अगर आप कोई भी पेज को करते हैं तो आपकी पेज में एडिट हो सकती है। दैट्स ऑल। I think you missed some addition or subtraction, multiplication in this one. So let's say I think it's 25. I remember the answer is I think 25 point something. So we keeping it till here for AS today. Next is about the electronic configuration and stuff. अब वो वाला part है जो 360 पे A levels में shift होंगे। 1S2 2S2 next week on.